Hello everyone, welcome to Shivangi Wason's podcast. So I am really happy to have you here today again. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हाउ मेंटल वेलबींग डायरेक्टली इफेक्ट करती है ब्यूटी इनसाइड और आउटसाइड. सो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए वी हैव विद अस आवर गेस्ट मनवीन कौर, जो एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है एंड इज़ वर्किंग एज अ स्कूल काउंसलर in one of the leading schools of Delhi. She has an experience for past 10 years in this field, guys. So I think आज आपको बहुत अच्छा knowledge gain होने वाला है उनसे. So we welcome Manveen to the Shivangi Wason's podcast today. So welcome Manveen to Shivangi Wason's podcast. थैंक यू शिवांगी. Welcome. आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी की अपीयरेंस हैज अ डीप रूट रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल वेलबींग एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, राइट? राइट, एब्सोल्युटली. सो मनवीन, आप बताओ कि कैसे रिलेट कर सकते हैं हम इन दोनों चीज़ों को. ब्यूटी का जो रिलेशन है मेंटल वेलबींग या जिसे हम कहते हैं मानसिक संतुलन से या मानसिक वेलबींग से, वो एक बहुत ही डीप रूटेड, लाइक यू राइटली सेड, एक रिलेशनशिप है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है. ये कोई एक नई बात नहीं है. इनफैक्ट व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, जब हम अपना ध्यान रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए सुबह उठ के एक ब्रश करना या नहाना, जिसका इतना एम्फेसिस है हमारे इंडियन कल्चर में, अपने आप को साफ सुथरा रखना, दैट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी वन पर्टिकुलर इवेंट. इट इज समथिंग विच आई थिंक हम लोग बहुत टाइम से और रोज मर्रा की जिंदगी में करते आ रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वेलनेस इंडस्ट्री. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ब्यूटी इंडस्ट्री. Because when you take care of yourselves, when you inculcate these habits into yourself, into your children right from the beginning, you are actually enforcing a value into yourself. So according to me, there is such a deep rooted connection. There is so much of emphasis on taking care of yourself. It just does not involve applying that makeup or doing that hair. It's actually when you are फॉलो प्रॉपर हाइजीन. जब आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, एक प्रॉपर हाइजीन फॉलो करते हैं, तब भी आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. आपको अपने बारे में सोच के, आपको अपने साथ रह के ज्यादा बेटर फील करता है. Imagine, in fact, not taking a bath for a week. How would you feel about it? You wouldn't feel nice about yourself because हमारे अंदर ये values इतनी ज्यादा डाली गई हैं, और हम आगे इनफैक्ट अपनी आने वाली generations में भी ये चीज इतना emphasize करते हैं that it has become a part of our routine. And according to me, beauty is not just about applying that makeup, like I'm emphasizing again and again. It's also about taking care of yourself at a very, very basic level. So I think, in fact, the beauty industry has taken this up a notch higher. वो इसको और आगे लेके गए हैं by promoting self-care in a bigger and a better way. So I guess that answers a lot of, the queries. In fact, a lot of people ask us about how has the beauty industry and how is mental health related to each other. So I guess it puts an end to all our queries because it's not just related to one factor. बहुत सारी चीजें हम लोग encompass करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग relate करते हैं when we talk about the beauty industry and the mental well-being of an individual. And how does it affect inside outside? I mean, how do we relate कि beauty industry में inside outside mental well-being, they are all connected. Right. You're absolutely right. Because कहीं ना कहीं शिवांगी, एक बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें. There is a lot of value, there is a lot of emphasis on acceptance of your appearance. And कहीं ना कहीं ये एक अपने आप को एक्सेप्ट करने का मतलब है जिस तरह आप हो, जैसा आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, जो आपके अंदर अच्छाई है उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप उसको और बढ़ाओ. ये बहुत जरूरी है आपकी खुशी के लिए, आपके अपने फायदे के लिए. एंड इसका एक बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी इमेज से, सेल्फ एस्टीम से, जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, जो हमारा आइडेंटिटी है, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एक्सेप्टेंस की. जिस तरह हम दिखते हैं, जिस तरह हम अपने आप को दुनिया के सामने पोर्ट्रे करते हैं. मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज जरूर करती रहूंगी कि अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना, जो हमें जिस whatever we are gifted with, it is very important to be comfortable with that. That is appearance, right? One's appearance. Your appearance, it is so important to be comfortable in that. But being comfortable in that actually is very skin deep. वो हमारे अंदर हमारी भावनाओं से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है. अगर हम अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स आल्सो.
ब्यूटी इंडस्ट्री में आई थिंक इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी रही हैं. वी कम अक्रॉस सो मेनी पीपल हु आर ब्रेकिंग द आइडियल ऑफ एक बॉडी इमेज जो हमें बताई गई है कि इतना पतला होना है, ऐसा होना है, या इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करना है. बहुत सारे लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे बाहर निकल रहे हैं. दे आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स, दे आर सो हैप्पी इन द वे दे आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स. एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी इमेज. जहां तक ब्यूटी इंडस्ट्री का सवाल है और मेंटल वेलबींग और एक्सेप्टेंस का सवाल है, आई थिंक अप्लाइंग मेकअप, आई थिंक गोइंग अंडर द नाइफ, अगर आप कोई सर्जरीज करवा रहे हैं, अगर आप कोई मेकअप लगा रहे हैं रोज की जिंदगी में, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एनहांसिंग योर लुक provided you are comfortable in whatever and however you feel about yourself. Ultimately, Shivangi, it's all about being happy. So if you are happy about the way you look and if you want to enhance your beauty, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं किसी तरीके से, I don't think there's anything wrong in that. And if your happiness, अगर आपकी खुशी उसमें है, please go ahead, ladies. I think go ahead and do it. If that is what makes you feel happy. So does it really affect positively or negatively person to person? Absolutely, absolutely. Like I am emphasizing, your acceptance of your appearance is so important. Every individual is different. We are all actually endowed with a very different or a very special genetic makeup. हम सबका एक अंदर एक genetics है जो एक अलग, हर बंदे से अलग है, हर इंसान से हम लोग अलग हैं. लेकिन अपने आप को कंपेयर करना किसी से सही नहीं है. जो हम लोगों को एक चीज आजकल के जमाने में कनेक्ट कर रही है, इतना जिस तरह की कैलामिटीज आजकल आ रही हैं, एक चीज जो हम लोगों को सबको कनेक्ट कर रही है वो है एक सर्वाइवल. एक जो एक हम एज अ स्पीशीज जो हम चाहते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंस है टू थ्राइव, एंड बहुत जरूरी है थ्राइव करना विद अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी. So it's very important if you involve yourselves, in a lot of activities, if you involve yourself in taking care of yourself. It does not matter whether you work out every day. जरूरी नहीं है कि आप रोज वर्कआउट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रोज अपने बाल बनाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रोज कुछ ना कुछ स्पेशल बना के अपने परिवार को खिलाते हैं. बट बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या नहीं. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने साथ जो मी टाइम के लिए हम लोग बहुत एम्फसाइज करते हैं, वो एक हेल्दी माइंड के लिए, ग्रोथ ऑफ एन हेल्दी माइंड, जिसे हम कहते हैं कि मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग. और मेरे ख्याल से ये जो अब हमें टाइम मिला है, इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए अपने लिए जो मी टाइम है उसमें निकालने के लिए. और जब मैं मी टाइम बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप से बातें करें या हम अपने घंटों अपने साथ स्पेंड करें. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. इवन इफ यू टेक आउट 10 मिनट्स, अगर आप रोज के 10 मिनट भी निकाल के अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, मैंने क्या बोला, मैंने कैसे बिहेव करा, क्या मेरे में सही है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, आई थिंक वो बहुत सारी नेगेटिविटी हमारी लाइफ से निकालता है. और जब हमारी लाइफ से नेगेटिविटी निकलती है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसकी जगह तो भरेगा, और वो है पॉजिटिविटी. और जब पॉजिटिविटी एक इंसान की लाइफ में भरपूर आती है तो आई थिंक इट completes your life and you are completed as an individual. So in short, we can say that we need to be happy from inside so that we can appear good from outside, right? Bilkul, Shivangi. I think that's the key, that's the motto, that's the goal, and that's the action we all need to take right now. And I think it surpasses every other belief that we've had for so long. Life's been a rat race. We've always been running after so many things. And मुझे लगता है अब ये time जो हमें मिला है, we are blessed to have this time. In fact, I keep telling everyone around me, make the best of this time. Just spend some time with yourself. Pick up a hobby, whatever you feel like doing. Do anything that you've been wanting to do for so long. Do it for a little while. If you get bored, do something else. It's okay to get bored also. It's okay to not be comfortable with people around you for a little while. So just do whatever makes you happy right now. So what do you suggest for individuals who are unable to cope up with the current scenario? Well, there's a lot you can do if you're unable to cope up. Like I'm emphasizing on a lot of me time that you can, spend with yourself. There's also something that we usually talk about, which is called gratitude, analyzing. So हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, जिसका हमें शुक्राना करना चाहिए. वो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में. एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, जो अगर हम अपनी जिंदगी में लेके आए, तो उससे हमारा मन, तन और दिमाग
आई थिंक एक स्थिरता जो हम कहते हैं वो मिलती है हमें। एंड जैसे मैं बार बार कहती हूँ, पॉजिटिविटी बहुत आती है हमारे लाइफ में। और जो लोग नहीं कोप कर पा रहे हैं, ट्राई इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग। कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड फैंसी लेबल्स टू बिकम क्रिएटिव। You can look up the YouTube, there is an Instagram, Yeah. there's so much on social media, you can just pick up that lipstick which you've been wanting to apply for so long. You can do up your hair in that style which you've been, wanting to try out. And just go ahead and wear that dress, try that on, be creative with it. Whenever I open the social media, there's so much of creativity around, and people are making use of whatever is there around them. अपने आप को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप घर के कामों में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, बट इफ यू थिंक यू हैव मोर टाइम ऑन योर हैंड्स, अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग दैट मी टाइम, और चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करो। अ हेल्दी माइंड is actually giving rise to a healthy body, and physically you will be able to connect better with yourself. कई बारी हमें ये भी नहीं समझ में आता हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हम अपने अंदर समा के रखते हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें अपने आप में नहीं पता कि हम लोग कितना केपेबल हैं। सो मेक यूज ऑफ व्हाटएवर इज अराउंड यू एंड जस्ट गो अहेड। समटाइम्स पीपल थिंक कि हम लोग मेकअप कर लेते हैं, लाइक आउटसाइड ब्यूटी दिखाते हैं, तो वी आर लाइक ओके विद इट। सो आई थिंक मेंटली अगर हम लोग स्ट्रांग है या हैप्पी है, दैट मीन्स दैट इक्वली एड्स टू अ ब्यूटी appearance. Absolutely, Shivangi, I totally agree, and there's nothing wrong. Just go ahead if you want to look beautiful. If because there is so much of negativity also at times, on people doing makeup, and there are so many comments being passed. I don't think that's the right thing. If you want to look beautiful, if you want to enhance yourself, I think it's a very nice way of just being happy. So looking good is another, it adds to that feel good factor in your life. When you dress up for an event, you feel so nice about yourself. So why not dress up every day? Maybe you don't want to overdress it, but you can always take care of yourself on a daily level. It's as simple as maybe, applying a pack, or maybe doing your hair in a nice way. Maybe one day you can blow dry them, the next day you can straighten them up. Whatever you feel is nice. But, taking care of yourself gives you so much of confidence. It boosts your self-esteem. And I think that is what is needed in times like these, to overcome all difficulties, to overcome all negativity around us. Yeah. So it was great, Manveen. Thanks, Manveen, for sharing your knowledge with us today. And it was great having you here. I think our audience would have gained a lot of knowledge from you today. So guys, don't forget to subscribe us, and we'll meet you in the next episode. So it was great, Manveen, having you here on our podcast. So guys, don't forget to subscribe and review, and we'll see you on the next episode. Till then, bye.